Okay, beta. Let me go to the presentation now. Now, Napier rule is applicable to special spherical triangles. What should be the speciality? The speciality in these triangles is 90 degrees. That means either any one angle or any one side of the triangle should be 90 degrees for us to apply the Napier's rule. So if you see a spherical triangle in which at least any one side or any one angle is 90 degrees, Napier rule can be applied there. Now, what does Napier rule say? Napier rule tells us that in any special spherical triangle, means having a 90-degree part, that is the speciality. If you know any two things other than the 90-degree part, 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के अगर आपको उस ट्रायंगल में कोई भी और दो चीजें पता है, it could be two sides, it could be two angles, it could be one side and one angle, कुछ भी हो सकता है ये. So any two sides of the triangle, if they are known to you, or any two parts of the triangle, if they are known to you, by using the Napier's rule, you can find everything else in that triangle. So if we apply the Napier's rule, it makes solving the spherical triangle very, very easy. Other than the 90-degree part, you need to know any two parts of the triangle and the entire triangle can be solved. Now, how do we apply this? So for applying this, we have to make a diagram. So what you do is you draw a circle, like I have drawn this blue color circle here. We have this PZX triangle, which is a special spherical triangle. You can see here that this angle Z is 90-degree angle. So it's a special spherical triangle. So when we apply the Napier's rule, we make this circular diagram. And in this circular diagram, we divide this diagram into 5 parts. Okay, so you can see these are the 5 parts in which we divide it. Now what we do is, whatever is the 90-degree part of the triangle, that is written on top here. So in this case, angle Z. Angle Z is the 90-degree part. So I write this angle Z on top. Now from this angle Z, you start to move clockwise or anti-clockwise in whichever direction you want to go. If you want, you can move clockwise. If you want, you can move anti-clockwise also. Okay. And whatever parts of the triangle, they keep on coming, you keep on filling them up in this circular diagram. So from Z, we move. We are moving anti-clockwise in the triangle. So next part which comes is small x, which is side x. So you see side x is built here in this part. Then you have angle P. You see angle P is built in this part. Now in the bottom 3 parts, that is this one, and this one, you see we write 90 minus, 90 minus, 90 minus. And whatever part is filled up, it comes after this value. After 90 minus synonym, we put the part of the triangle after this. So in number 3 part here, you see it is 90 minus P.
When you go further, the next part of the triangle which comes in is small z or side z. So you see in part number 4, it is 90 minus small z. And the next part is capital X or angle X. So you see in number 5, it is 90 minus capital X. And the next part is side P. So you see we have side P here. And once the triangle is completed, the circular diagram, all parts are also filled up. So this is how we fill up the parts. Now, as I told you, you can go clockwise, you can go anti-clockwise. If you want, you can go clockwise in one part and anti-clockwise in the other part. Like in the triangle, if you want to go anti-clockwise, it is perfectly fine. In the circle, if you want to go clockwise, it is perfectly okay. So whichever direction you move, whether you move clockwise or you move anti-clockwise, both ways, the Napier rule application is going to be correct. So bottom line is that whichever way you apply this Napier's rule, you need to be really intelligent to make this wrong. So whichever combination you select, the filling up of the diagram, filling up of the circular diagram is going to be correct always. So once this diagram is filled up, after this we apply the Napier's formula. Okay. So beta, any doubt you have in filling up of the circular diagram? ओके ये क्लियर हो गया बेटा. वी कैन गो क्लॉकवाइज, वी कैन गो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों केसेस में ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. सर थोड़ा सा बाउंस हो रहा है सर, वापस से थोड़ा बता सकते हैं बेटा यू वांट मी टू रिपीट दिस? यस सर, वंस मोर. Okay, let's go to the whiteboard. I'll open up the whiteboard and show it to you there. Just give me 1 minute. I'm opening up the whiteboard. Okay, beta, I hope you can see the whiteboard here now on the screen. Okay, let me draw a triangle here now. So we can draw the same triangle here. Let's call it PZX. And let's say this angle Z is a 90-degree angle. अब हमने इस ट्राइंगल पे नेपियर रूल अप्लाई करना है. So what we saw was we make a circular diagram. इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया. So how do we do that? ये 5 पार्ट हमारे पास आ गए बेटा. अब जो भी हमारा 90 डिग्री वाला पार्ट है इन दिस ट्राइंगल, यू सी एंगल Z इज 90 डिग्रीज. हमने एंगल Z को यहाँ पे ऊपर लिख दिया. नीचे वाले जो तीनों पार्ट हैं, द बॉटम 3 पार्ट्स,
इनमें हम पहले से ही लिख देते हैं बेटा 90 माइनस 90 माइनस एंड 90 माइनस. So up to here, okay? Yes, sir. Okay. Okay. अब बेटा Z से आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी. बताओ किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो बेटा? Clockwise. Clockwise. Sir, clockwise. सो Z से हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं. ये मैंने क्लॉकवाइज का एक एरो बना दिया. जब हम Z से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला पार्ट ट्रायंगल का कौन सा आएगा? Small p. ओके, या यू कैन से साइड ZX. इसमें मैंने स्मॉल लेटर नहीं बनाए, सो यू कैन से साइड ZX. हम यहाँ पर इस पार्ट में ZX को लिख देते हैं. ZX आ गया यहाँ पे. इससे अगला पार्ट जो आएगा दैट विल बी एंगल X. सो इससे अगले पार्ट में चले गए, यहाँ हमने लिख दिया एंगल X. इससे अगला पार्ट जो आया वो आया PX. सो हम आगे चले गए, हमने यहाँ पे लिख दिया PX. विच इज द नेक्स्ट पार्ट बेटा नाउ? Angle P, sir. एंगल P. सो Angle हमने P. नेक्स्ट पार्ट में एंगल P फिल कर दिया. द नेक्स्ट वन इज PZ. यहाँ हमने PZ को फिल कर दिया. ओके, अब बताओ बेटा इसमें डाउट है अभी और इज इट क्लियर? Clear, sir. Clear. ओके, सो हमारी जो ये डायग्राम है ये डायग्राम fill up हो गई. Now once the diagram is filled up, we can proceed to apply the formula. So let us see how do we apply the formula. Let's go back to the presentation. Formula. There are two formulas which we apply. The first one is sine of the middle part is equal to tangent of adjacent part 1 multiplied by tangent of adjacent part 2. The second one is sine of the middle part is equal to cos of opposite part 1 multiplied by cos of opposite part 2. So what do we understand by these middle part and adjacent part? Let's understand. Now, beta, as I told you, Napier rule can be used if you know any two parts of this special spherical triangle other than the 90-degree part. So in this triangle PZX, you can pick up any two parts which are known to you other than angle Z. Angle Z is 90 degrees. So any two parts which you can pick up and tell me in this triangle PZX which are known to you. Side px and angle x. Sir, angle P and angle X. Okay. So angle P is known to you. What else, beta? Sir, angle X. Okay, angle X. So other than this 90-degree part, which is angle Z, let us say we know angle P and angle X. Now with these parts, we can find out anything else in this triangle. So what is the first part which you want to find out? Any one part you can tell me. Side small z.
So small z. Okay, so this is small z which we want to find out. तो मैंने जो फाइंड आउट करना है उसे रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है एंड जो हमें पता है उनको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है. Now let's identify these parts in this circular diagram. What we want to find out is small z, and we can see this small z is here in this part. So let me mark this part as red. This is the part which we want to find out. And the parts which are known to us, one part which is known to us is angle P. So you can see here, this is where angle P is. And the next part which is known to us is angle X. This is where angle X is. So in the circular diagram, now the three parts are highlighted. One part which we want to find out is in red. The two part which we already know are in green. अब बेटा इन तीनों में से हमें एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है, लेकिन मिडल पार्ट कैसे बनाना है? बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो या तो उसके एडजेसेंट हो जाएं या दोनों के दोनों उसके ऑपोजिट हो जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट एडजेसेंट हो गया और दूसरा पार्ट ऑपोजिट हो गया. दिस शुड नॉट हैपन. आइदर बोथ शुड बी एडजेसेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट. अब एडजेसेंट और ऑपोजिट का क्या मतलब है? कोई भी पार्ट अगर आप पिक करते हो, लेट अस से आई पिक अप दिस पार्ट नंबर 3. Now two parts are sharing their boundary with this part. Number 2 part and number 4 part, ये दोनों number 3 के साथ अपनी sides touch कर रहे हैं, so they are known as adjacent parts. दो पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं और इसके साथ नंबर 3 के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते. That's number 1 and number 5. नंबर 1 and number 5 3 के साथ बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं, so they are known as opposite parts. तो हमें अब इन तीनों में से एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है, so that बाकी के दोनों पार्ट या तो दोनों के दोनों एडजेसेंट बन जाएं या दोनों के दोनों जो हैं ये ऑपोजिट पार्ट बन जाएं. तो which part should I pick up as my middle part? Number 4. Very good. Number 4 has to be my middle part. Because अगर मैं नंबर 4 को मिडल पार्ट लेता हूँ तो 3 and 5 ये दोनों के दोनों इसके एडजेसेंट पार्ट बन जाते हैं. अगर मैं 3 या 5 में से किसी को अपना मिडल पार्ट लेता हूँ, लेट अस से इफ आई ट्राई टू मेक नंबर 3 एज माय मिडल पार्ट, तो नंबर 4 तो एडजेसेंट हो जाएगा, नंबर 5 ऑपोजिट हो जाएगा. तो हमारे फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक एडजेसेंट हो और दूसरा ऑपोजिट हो. आइदर बोथ शुड बी एडजेसेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट. So number 3 cannot be taken as a middle part. Similarly, number 5 cannot be taken as a middle part. So we take number 4 as our middle part and बाकी के दोनों हैं adjacent. So we will use the adjacent formula here. It says sine of middle part, that means sine of 90 minus small z is equal to tangent adjacent part 1. One part is 90 minus x and the second part, adjacent part, is 90 minus p. So you see, if we know angle x and we know angle p, the right side of this formula is known to us. If we put these values here and put them in our calculator, we will be able to easily find out the middle part, which is 90 minus small z. एंड z पार्ट जो है, ये साइड z जो है स्मॉल z, ये हमारे पास आ जाएगा. ओके, सो बेटा अप टू हियर कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिए लास्ट पार्ट नेमिंग करने के बाद में, जब हमको पता चल गया कि एडजेसेंट और अपोजिट पार्ट कौन से हैं, उसके बाद एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए. ओके ओके, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड शो यू. अब बेटा हमने देखा कि हमारे पास 3 पार्ट आ गए हैं
लेट्स शो देम इन ग्रीन एंड रेड। ये वाला पार्ट जो है ये भी हमें पता है, ये वाला पार्ट ये भी हमें पता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। सो अब हमने बेटा इन तीनों में से एक को मिडल पार्ट बनाना है। मिडल पार्ट बनाना आपको आ गया है? यस सर, आ गया। ओके, मिडल पार्ट ऐसे बनना चाहिए कि इन तीनों में से जो बाकी के दो पार्ट बच जाएंगे वो दोनों या तो उसके एडजेसेंट हो जाएं या दोनों के दोनों उसके ऑपोजिट हो जाएं। सो मिडल पार्ट ऑब्वियसली मुझे ये वाले पार्ट को बनाना पड़ेगा। इसे मिडल बनाता हूँ तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट आ जाते हैं। किसी और को अगर मिडल बनाऊंगा तो फिर एक एडजेसेंट हो जाएगा और एक ऑपोजिट हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हमने इसको मिडल पार्ट बना लिया। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ द मिडल पार्ट। सो लेट्स राइट इट डाउन। हमारा मिडल पार्ट है 90 माइनस पी एक्स। So it will be sine of 90 minus px is equal to tangent of adjacent part. So हमारा ये जो पार्ट आ गया 90 माइनस p आ गया into tangent of adjacent part 2. So ये हमने tangent जो है सेकेंड पार्ट कर दिया है 90 माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला बेटा अप्लाई हो गया। अब बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा फॉर्मूले में? आ गया सर, अब समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। सो साइन ऑफ मिडल पार्ट इज इक्वल टू टेंजेंट एडजेसेंट मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट एडजेसेंट। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके okay, so beta we are at about 440 now. So let's stop today's session here. So next session में मैं दोबारा आपको जो ये नेपियर रूल है इसका एक recap करा दूंगा. So we will cover up the remaining Napier's rule in the next session. So और बेटा up to now any other doubt or query which has come in your mind related to the topic which we covered or related to anything else? No, sir. Okay. Okay. So फिर हमारा सेशन जो है बेटा यहीं एंड होता है. That's all for the first session of TCN. And next session में जब हम मिलेंगे, I think I have a session with you tomorrow, right? Tomorrow we have TCN session. Yes, sir. Two class. Right, beta. So tomorrow when we meet, we will continue with the Napier's rule application. Napier rule को understand करेंगे, and once these two are understood, we will be able to go into great circle sailing problems. So that is the plan for tomorrow. अब बेटा ये जो ग्रेट सर्कल एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी फिर जो प्रैक्टिस होगी, दैट प्रैक्टिस विल बी फ्रॉम योर प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक. आपके पास कैप्टन सुब्रमण्यम प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक है बेटा? सेकंड प्री सी में आपने यूज की होगी. Yes. यस सर है। वेरी गुड. सो उसी बुक में ग्रेट सर्कल की एक एक्सरसाइज है. हम उसी एक्सरसाइज से फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो इफ यू डोंट हैव दैट बुक, you can arrange that book. So that is where we will practice. So अगर टाइम भी लगेगा, don't worry, I will send a WhatsApp of the exercise to you, or anyone who has that book with him, he can just share a screenshot of the exercise when we cover up the great circle sailing. So that's all for today's session beta. See you in tomorrow's session. Bye bye till then. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you beta. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Bye.
Thank you, ma'am. Ma'am, you are there in their WhatsApp group. I am not included in the WhatsApp group. So can you please include me there? हाँ यस सर सर अरुण सर को बता दूंगी मैं, वो एडमिन है ग्रुप के, तो मैं बता दूंगी उनको, ऐड कर देंगे आपको. All right, ma'am. Thank you so much. Thank you. ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय. Thank you, ma'am. Bye bye.